everyone, this is Anuj from Chemical Engineering Concepts, and today we are going to start a new series. Okay, so this series will be based on solution thermodynamics, which is a part of chemical engineering thermodynamics, right? So guys, इस series में हम काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें जो important हैं आपके लिए, आपको जानने के लिए for chemical engineers, वो हम explore करने वाले हैं, right? So let's see what do you mean by this solution thermodynamics. आज के लेसन में हम जानेंगे basic introduction of this solution thermodynamics और कौन कौन से topic, okay, which are the topics which we will be dealing with in this series, right? So let's see what we have. So basically, what do you mean by solution thermodynamics? It is the application of thermodynamics when we have gaseous mixtures, right? When we have gaseous mixtures and liquid solutions, right? So guys, for these two specific domains, we are going to apply the solution thermodynamics. Other than this, we will be having multi-component fluid mixtures, right? There are multi-component fluid mixtures. For that we have so many industries, guys, right? There are so many industries. For example, microelectronics, right? There are personal care products. There are pharmaceutical industries, chemical industries, industries that deals with energy, right? So all these, in all these industries, we see these multi-component fluid mixtures, right? And these multi-component mixtures undergoes the composition change. और ये composition change कैसे होता है friends? ये composition change होता है by mixing, right? And there are different separation processes, right? And because of these processes, there is a transfer of species from one phase to another, right? And yes, there will be chemical reactions as well, right? Because we are dealing with the different chemicals, okay? We are dealing with the different liquids, different gases, okay? So chemical reaction has to be there. In this solution thermodynamics, we are going to introduce you to some new process variables, right? So some new process variables will be introduced here, and yes, their relationships with the thermodynamic properties have to be set up, right? So these are the things that we will be dealing with in the solution thermodynamics. Let's see what's coming your way on this series. क्या क्या topics हम पढ़ने वाले हैं, right? Let me just introduce you to these topics. So first of all, in our next lecture, in our next lesson of this series, we will be dealing with the fundamental property relations. Okay, so what are fundamental property relations, how they are introduced, and how they will be used, right? All these things will be dealt with, right? They will be applicable to open systems, okay? There will be applicable to the closed system as well, right? So we will see all of them in the next lesson. After that, we will be dealing with the chemical potential. Okay, so what is a chemical potential, which is a fundamental new property, right? So chemical potential will be introduced to you, its applications, right? So it is basically a very important factor when it comes to chemical reaction equilibria, right? So ये सब भी हम इस series में पढ़ने वाले हैं. After that, I will introduce you to the partial properties. So friends, partial properties का actual meaning क्या है, application wise वो भी हम जानेंगे इस series में, right? Partial properties generally are introduced as a class of thermodynamic properties that are defined mathematically to distribute total mixture properties among individual species as they exist in the mixture. तो भाई अलग अलग components की क्या क्या properties होंगी, ठीक है, individually, right? So mixture तो है, but अलग अलग components हैं, उनके साथ भी properties associated होंगी. So उन properties को हम partial properties बोलते हैं, और किस तरह से हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये सब भी हम जानने वाले हैं. एंड यस, ऑब्वियसली व्हेन वी हैव मिक्सचर्स, सो दीज पार्शियल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली विल बी कॉम्पोजिशन डिपेंडेंट. ये सभी किस कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है हमारे मिक्सचर में, इस पर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, राइट. नेक्स्ट, वी विल बी डेवलपिंग प्रॉपर्टी रिलेशंस, राइट. प्रॉपर्टी रिलेशंस, इन प्रॉपर्टीज के बीच के रिलेशनशिप हम अप्लाई करेंगे, डेवलप करेंगे, राइट, फॉर द आइडियल गैस मिक्सचर्स, और उसको यूज करके एज अ बेसिस, एज अ रेफरेंस, ठीक है. सबसे पहले हम आइडियल गैस स्टेट मिक्सचर के लिए
अपने प्रॉपर्टी रिलेशंस को डेवलप करेंगे एंड देन वी विल यूज देम एज अ रेफरेंस, राइट, वी विल यूज देम एज अ बेसिस और रेफरेंस टू डील विद द रियल गैस मिक्सचर्स, राइट। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गाइज, फ्यूगैसिटी भी हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। फ्यूगैसिटी भी हम डिस्कस करेंगे विच इज एक्चुअली अ प्रेशर, ओके, प्रेशर यूज्ड फॉर द रियल सिस्टम्स, राइट। सो इसको भी हम डिटेल में आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या यूज में आता है, इट हेल्प्स इन द फेज एंड केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। सो हाउ इट इज यूज्ड हियर, ये भी हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। We will also introduce you to the useful class of solution properties. So excess properties क्या होती हैं, reduced properties क्या होती हैं, right, in conjunction with the idealization of solution behavior, okay. So solution behavior में किस तरह से excess properties यूज होती हैं, ठीक है, और ideal gases के लिए किस तरह से reduced properties यूज होती हैं, ये भी सब हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज, राइट। सो हमारा जो एम है वो वही रहेगा that we will like develop some ideal solution models and these models will be used as a reference for the real solution behavior. So guys, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इस सीरीज में, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to subscribe this channel, right guys, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, right. So guys, I request you to subscribe to this channel Chemical Engineering Concepts and hit the bell icon so that you never miss any update from our side. So this is Anuj Chaturvedi signing off from this lesson number 1. I will meet you in the next lesson with our fundamental property relationships. Thank you so much for listening.